हमको तब दिखते हैं, लाइक लेट्स से कि जो जैसे आपने कोई टी कोड किया, आपने दो टी कोड को ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। हम्म। आपके अकाउंट में एक टी कोड है। जब आप हम्म। रिक्वेस्ट रेज करती हैं, ठीक है, हम्म। कोई रोल के लिए या किसी जो कि मुझे मतलब टी कोड के एक्सेस के लिए मुझको यूजर मैनेजमेंट का एक्सेस चाहिए, हम्म। ठीक है। तो उस टाइम पे सिस्टम रिस्क एनालिसिस रन करता है, ठीक है। सिस्टम इनफैक्ट एक्चुअली वी जो हम यूजर्स होते हैं, लाइक हम्म। या हम लोग ही रिस्क एनालिसिस मैनुअली भी रन कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ओके। ओके, लेट मी कनेक्ट। WBC compliance, access management. See, access risk analysis, right? Monica, is यस it आमिर। still visible, right? यस। Yeah, all right. So here, this is access risk analysis, and we use user level and role level. Okay. For हम्म। example, we have selected user level. ओके। No, this one, user. Okay, you are not synchronized into this. Means we select the username here. Okay, and then select the rule sets here. Global rule set, custom rule sets. Which one we will select? Let's select uh, global rule sets. Then we select on action level, permission level, and uh, run this risk. All right. हम्म। Give me a second. No, it will be not there. I think this must be it. Is this your user ID here? इट्स के ए आई थिंक। Okay, then it's wrong, Monica. I think I filled it. No worries. What's the error? ओके, मीन्स देखिए यहाँ से हम लोग अगर यहाँ पे कोई रिस्क होता है इस यूजर के अकाउंट में, तो हमें रिस्क पता लग जाता है। ऑलराइट। ओके। सो सेम वे हम लोग वेट, क्लोज दिस, रोल लेवल पे करते हैं। जैसे कि कोई यूजर अगर रोल चाह रहा है, तो हम ये जो है यहाँ पे रिस्क एनालिसिस रन करते हैं, चेक करते हैं, और फिर जैसे मैंने रूल सेट सिलेक्ट किया था ना,
तो वो जो जितने भी रूल सेट्स होते हैं वो सारे उसमें जितने भी रिस्क होते हैं उस रूल सेट में, वो सारे चेक हम्म। करता है और फिर उसके हिसाब से वो एरर बताता है कि इज देयर एनी एरर और नॉट। ओके। अभी एक रिपोर्ट आई थी ना सामने, मतलब उसमें एक्चुअली कोई एरर नहीं था तो हम्म। इसलिए इट वाज शोइंग ब्लैंक। ओके। ओके। तो हम लोग यहाँ से रिस्क एनालिसिस करते हैं यूजर लेवल पे और रोल लेवल पे। रोल लेवल हम्म। सिर्फ यूज करते हैं जब हमको सिर्फ ओनली रोल चेक करना होता है, ओनली फॉर रोल। ओके। हम्म। व्हेन देयर इज अ यूजर इन्वॉल्व, देन हम लोग दोनों करते हैं। मींस सपोज आप एचआर डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है। अब आपको अगर हम्म। मैं कोई रोल दे रहा हूँ, असाइन कर हम्म। असाइन किया जाए, तो उससे जो है क्या जो है वो एसओटी कोई ब्रीच होगा या कोई जो है रेगुलेशन ब्रीच होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के हम्म। रेगुलेशंस। ठीक है। ओके। और फिर हम्म। रोल जो है, तो आपको पास वो ऑथराइजेशन आ जाने से क्या आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगी एसओटी। तो हर हर लेवल से ये हम यूजर लेवल एंड रोल लेवल पे दोनों चेक करते हैं कि कहीं से कोई रिस्क तो अराइज नहीं हो रहा। अब कोई रिस्क अराइज हो रहा है तो वो जो है तुरंत जो ट्रिगर करेगा, तुरंत रिपोर्ट में शो करेगा। और फिर जो है उसको हम्म। हम लोग आगे फॉलो करते हैं। जैसे रोल लेवल हम सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखें रोल कितने हैं। वो ओके। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके। तो सिलेक्ट किया। हम्म। ओके। बिजनेस प्रोसेस नहीं करना। रिस्क लेवल मीडियम, सिस्टम। ओके। एक्शन लेवल। अब जैसे मैंने रोल सेलेक्ट किया, अब ये रोल, इस रोल से रिलेटेड जितने भी वो होंगे क्या कहते हैं एरर्स। हम्म। देखो ये एरर दिखाता है कि इसको फोरग्राउंड में करना चाहते हैं कि बैक उसमें करना चाहते हैं। हाँ। ओके। देयर वाज नो एरर फाउंड, नो रिस्क फाउंड, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग ऑल राइट। ओके। ये एरर बता रहा है ना? हाँ। रिस्क एनालिसिस फिनिश्ड विद एरर चेक लॉग फॉर नो नो डिटेल्स। आई नो। ये ये ब्लैंक हो जाता है तो यूजुअली एरर का शो करता है, बट देयर इज नो एरर। ओके। ओके। बट हाँ यहाँ पे हमको देखो, अगर रिस्क होता कोई तो हमें यहाँ पे हम्म। रोल का नेम रोल का नेम आता। उसके हम्म। अगर कोई रिस्क आईडी बनी होती तो वो आता। रूल हम्म। सेट आईडी आता। रिस्क लेवल ओके। हाई लेवल लो मीडियम क्या है बताता। सिस्टम नेम हम्म। बताता। हम्म। एक्शन मीन्स टी कोड। ओके। कंट्रोल मीन्स एक मिटिगेशन मैंने आपको बताया था ना कि मतलब कोई रिस्क है तो उसको हम एक्सेप्ट कर हाँ। लेते हैं। तो ये वो हम्म। मिटिगेशन आईडी बताता है कंट्रोल पे। मॉनिटर हम्म। मीन्स हु इज द मिटिगेशन कंट्रोलर, मीन्स हु इज चेकिंग दिस रिस्क, हु इज द हम्म। ओनर ऑफ द रिस्क। ओके। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस रिपोर्ट में शो कर देता है ओके। when the risk is found. Okay. So let's ओके। suppose you have requested a, you are from SAP Security team and you have requested a for
SA38, let's say ST code SA38 which is used by ABAP team. ओके, हम्म तो सिस्टम यहाँ पे जो है जब आप रिक्वेस्ट करती हैं तो सिस्टम रिस्क एनालिसिस रन करेगा यूजर लेवल, रोल लेवल पे, और चेक करेगा हम्म क्या SA38 आपको देना ओके है कि नहीं। ओके ठीक है, और के, हाँ यहाँ से देखिए एक्सेस रिक्वेस्ट दिख रही है आपको। हम्म JRC में एक्सेस रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं। ओके, फॉर हम्म एग्जाम्पल ये यहाँ पे तो टेस्ट आएगा, यू वांट अ न्यू अकाउंट, चेंज अकाउंट, चेंज अकाउंट, ठीक है, सेल्फ के लिए हम्म बिजनेस प्रोसेस क्या रहेगी, बेसिस, ओके इसमें कोई सा प्रोसेस नहीं है, ओके लेट इट बी बेसिक ओनली। ठीक है, अब यूजर एक्सेस, यहाँ पे फॉर्म आया, ऐड आई वांट रोल। ओके, अब हम्म यहाँ पे हमको सिस्टम में चेक करेगा, बताएगा कि कौन सा रोल तुम्हें चाहिए। लेट्स सेलेक्ट असिस्टेंट, देव, नो वेरिएबल आइटम। ओके, एक सिस्टम अवेलेबल है, वी हैव सेलेक्टेड दैट्स द सिस्टम, हम्म रोल टाइप, सिंगल रोल, डिराइव रोल, बिजनेस रोल, सो वी सेलेक्ट बिजनेस रोल है, नो बिजनेस रोल अवेलेबल। यार फिर भी अवेलेबल नहीं है। सॉरी, नो रिजल्ट फाउंड, नो रिजल्ट फाउंड, क्या किया जाए। ओके, लेट इट बी। सो यहाँ पे हमको ये पूरा एक्चुअली जो ये मैंने फॉर्म दिखा रहा था, आई थिंक कुछ कॉन्फ़िगरेशन में GRC कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इश्यू है जिसकी वजह से हम लोग देखने हम लोग के पास ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हम्म यहाँ पे हमें हमें पूरा फॉर्म भरना पड़ता है और रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ती है। ये फॉर्म, हम्म ये तो मेरे डिटेल्स देगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे हमें हम्म रिस्क, रन रिस्क एनालिसिस करने का भी ऑप्शन आता है। ठीक है, बट इतना कोई नहीं करता, बस सब फॉर्म भरते हैं और हम्म उसको सेंड कर देते हैं। फिर जो जब फॉर्म आगे बढ़ता है तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या आता है कि जैसे ही आपने ये रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट किया, ठीक है, हम्म आपका जो इमीडिएट सुपरवाइजर होता है या सुपरवाइजर मैनेजर, ओके, हम्म मीन सुपरवाइजर होता है, मैनेजर मैनेजर होता है, उसके पास रिक्वेस्ट जाती जाती है, वो चेक हम्म करता है रिक्वेस्ट को। ठीक है, ओके और फिर उसको अप्रूव या रिजेक्ट करता है। हम्म क्या रिमेम्बर दिस, वो अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है रिक्वेस्ट को आपकी। हम्म
वो अगर अप्रूव करता है तो रिक्वेस्ट आगे जाती है, और एक्सेस रिस्क, और ये एक्सेस रिस्क एनालिसिस करता है सिस्टम ऑटोमेटिकली। हम्म ओके, उसमें सिस्टम ऑटोमेटिकली ये रन करता है। इफ एनी रिस्क हम्म इज फाउंड, ओके, विद रिक्वेस्ट मेड, तो वो रिस्क रिक्वेस्ट जाती है रिस्क ओनर के पास। ठीक है, अगर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है कि हाँ ठीक है रिस्क है लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस, देन इट हम्म गोज टू दैट मिटिगेशन ओनर। हम्म ठीक है, मिटिगेशन 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 ओनर क्या करता है, वहां पे जो मिटिगेशन आईडी असाइन होती है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम हम्म में जैसे हमने रूल सेट जब डाउनलोड किया था, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम पहले डाल चुके हैं कि दिस विल बी द मिटिगेशन आईडी फॉर दिस रिस्क। ओके, हम्म तो वो मिटिगेशन आईडी की नोटिफिकेशन आ जाती है उसके पास। वो उसको एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, या हम्म वी आर असाइनिंग this T code to the user, and we will monitor this risk. ओके, हम्म वहां पे मतलब वो अलाउ करता है। जैसे ही वो अलाउ करता है, वो रिक्वेस्ट जाती है एसएपी सैप सिक्योरिटी टीम के पास कि अदर वी हैव टू मेक वी हैव टू चेंज अ रोल, और वी हैव टू क्रिएट हम्म अ न्यू रोल। गिव मी अ ओके। सेकेंड।
Monica, you there, right? Yes. Yeah, all right. So that's what I was saying कि मिटिगेशन ओनर जब अप्रूव कर देता है तब रिक्वेस्ट हमारे पास आती है। फिर Mm-hmm. अदर टू क्रिएट अ न्यू रोल or to change a new change existing role. We make the changes and forward it to the production system. जो मैंने Okay. आपको सैप सिक्योरिटी टाइम बताया था कि रोल क्रिएट करके उसको आगे बढ़ाते हैं, वो काम हम लोग Mm-hmm. तब करते हैं। ओके। Mm-hmm. हाँ। सो at that time risk analysis, we run the risk analysis. Okay. Okay. Now जैसे कि document how to run the risk analysis means define analysis criteria, Mm-hmm. means such as system user. Okay. Then Mm-hmm. there's an option for some type of report, means we need summary, detailed report, or there's a called management summary and executive summary. These are the types of reports that we can fetch. Then Yes. define simulation criteria, like I've showed you that how to add action and permissions. All right. Mm-hmm. So Right. we select action there. Permission is already selected. Have to select action there. Mm-hmm. Then we run the simulation. Mm-hmm. Okay. If there is any risk found, then it will highlight in the report. And report is very easy to matlab, easy to read or easy to interpret report. Okay. Okay. So let's this. First of all, we have to select the criteria. Like let's select the system. Mm-hmm. I will select this one. Okay. Now it's up to us. We can select this demo. This is a group of system. Like suppose when you will be working for SAP Security, Mm-hmm. your team will have a group that these people are working for SAP Security. All right. So Okay. we are running for all the people who are under all the users who are under demo group. Mm-hmm. Okay. Then risk level all. Then we have to select the rule set. Uh, Global. Okay. Mm-hmm. No, sorry, test one. Action level. Let's run in background. Okay. Test. See, so it is showing us when do we want to perform it. Right now or later. 7:30. Job scheduled successfully. All right. Okay. Then we close it. And if we want to check that, here, see, background Mm-hmm. scheduler, background jobs. So we can see our report. See this one. Once it is finished, it will show us finished like the other reports. Right now it is and it is released. Means I have scheduled it. Once the Mm-hmm. time, when the uh, background job is completed, it will show us as finished. All right. Okay. Yeah, it is showing finished. So we select this, view results. So this is the see there was no risk found. Okay. Mm-hmm. So
but we can see what will be the elements of the report. Like I have said, user ID, access risk ID, rule ID, risk level, system, T code or action. When was the uh, this T code was used last? Okay, how many times have the user used this T code? Who is the mitigation controller and who is the monitor? Okay, so all this information we will be able to see. Also, there was one more thing. Sorry, yeah. For example, if anything is found, we have the option to mitigate risk. Okay, we can control. Okay. Suppose there was a risk which was found, but there was no mitigation controller. So we can mitigate the risk from here as well. We can assign the risk owner as well here. Okay. Okay. Oh, sorry. So this was the work of for access risk analysis to run the risk analysis. All right. Okay. After that, we will now go for mitigation controls. Like I told you that if a risk is found, okay, and it is important for the business process that we cannot remove the risk, then we use the mitigation control. Means we assign a controller or a monitor Okay. who uh, checks the activity performed by the risk by the authorization. For example, you have requested SA38. You are working in SAP Security team and you have requested SA38. It was granted to you and a mitigation controller was assigned. So whenever you use SA38 T code, okay, a log will be created and it will be sent to the mitigation controller. He will check if if the access was authorized or not. Okay, if you are misusing the assigned T code or not, if he will check it, and if it's fine, then okay. Otherwise, uh, he will report it to the management. Understood? Okay. Yeah. Yes. So, see, this is about mitigation. So, mitigation control in SAP GRC is a mechanism that allows you to manage certain risk violations that you want available to specific users or roles. Okay. Means risk will be there's a risk violation. Means risk is there, and we are still using this. For example, for SAP security team, using SE0 and PFCG both are assigned. It's a violation of a risk, SOT risk, but it is still needed for the business to run. That's why this violation is acceptable. Okay, mitigation allows you to Okay. mitigate certain risk violation that you want available for specific users. Okay, why mitigation is required? You can use mitigation controls when it is not possible to separate SOT from the business process. I gave the example for SC0 and PFCG, it is against SOT, but it's still needed for the business. Otherwise, for SAP security team, they will for every task they will need two people, one for user administration and one for role designing. Okay. Okay. So instead, they have assigned both to a single user, and he performed both the tasks. Now you can Okay. use mitigating control to associate control with risk and assign them to users, role, profile, or HR objects. You can then define individual control monitors or approvers and assign them to specific controls. Means, like I've told you, that we can assign those risks to the user. Okay. To the user, Okay. whether it's a role, whether it's a profile, whatever the risk type is, it will be assigned to the user. Okay, and an individual, a manager, or whoever is the mitigation controller. Okay, so he will be assigned that uh, risk as well to monitor it, and this is called the mitigation controls. Okay, Okay. any questions?
Not till now. Not till now. Okay. Yeah. Hmm. Oh, okay, there's no mitigation tool. All right. So see, when we run the risk analysis, sorry, already in the report. All right. Yeah. Mm-hmm. Background jobs. Let's check this one. Okay. Wait, wait. Yeah. So see, if any risk is found and it does not have a mitigation control, then we can select that risk, click on mitigate risk. Mm-hmm. Okay. Here see, add. Now we can add the user ID. Okay. Organizational rule ID, access risk ID, description, uh, then rule set ID, rule set name, system, control ID means similar to risk ID. A control ID is created for mitigation control. All right. Mm-hmm. To show that uh, this risk belongs under this mitigation controls. Okay. So we can assign it Okay. here. Who will be the controller? Who will be the monitor? Uh, sorry. Shit. कोई मिटिगेशन कंट्रोल नहीं बना यहाँ पे. Alright, Monica. Mm-hmm. No mitigation control have been created yet here. That's why I'm not able to show you. Okay. Okay. Plus, no no roles are there as well. Okay. So I will do it by tomorrow. Okay, Mm-hmm. and then show you how we create this mitigation controls. All right. Okay. Yeah. So for now, what? Yeah. So Monica, I will start tomorrow. All right.